Hello students, how are you all? I hope everybody is fine. So in this video, I am going to teach you about the evaluation and the simplification of rational numbers. So we have already done addition of rational numbers. So we have done question number 1, question number 2, and I have explained you 4 options from both the questions. Now I am going to solve question number 3 and question number 4 from the same exercise. So question number 3 is evaluate. Evaluate means we have to find out, that means this is addition of rational number only, but here what happens, we have more than 2 rational numbers. In addition of rational numbers we were having two rational numbers, but in this question we are having more than 2 rational numbers. Okay students, so this question is also having 6 options. So out of those 6 options I am going to solve 3 options, that is option number 4, option number 5, option number 6, right? And 1, 2, 3 will be your homework. So question number option number 4 is minus 16 upon 9 plus minus 5 upon 12 plus 7 upon 18. Now as we all can see that the denominators are different. So to make all the denominators same, what we have to do? We have to take the LCM of 9, 12 and 18. So now I am going to take the LCM of 9, 12 and 18. 3 3s are, 3 4s are, 3 6s are, then 3 1s are, and then 3 2s are. So this will go by 2 2s are, 2 1s are, then again 2 1s are, 2. So 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 2s are 36. So what is the LCM of 9, 12 and 18? The LCM of 9, 12 and 18 is 36. So you have to take the LCM in the rough column and you will write like this. Since LCM of 9, 12 and 18 is 36, then the next step will be 9 को 36 बनाने के लिए किससे multiply करेंगे? 4 से. 12 को 36 बनाने के लिए we have to multiply by 3, and to make 18 as 36 we have to multiply 18 by 2. Now 16 4s are 64, plus minus minus 5 3s are 15, plus 14 upon 36. Now we have made the denominator same. Now which rule will be followed? BODMAS rule will be followed. So as per the BODMAS rule, firstly we have to multiply, then add and then subtract. Multiplication is not in this question. तो पहले आप क्या करेंगे, जब भी आपको कहीं पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों दिया है एंड देयर आर मोर देन 2 नंबर्स, तो पहले आप ऐड करेंगे तब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट? फर्स्टली व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्टली यू विल ऐड एंड देन यू विल सब्ट्रैक्ट. I hope everybody has understood what we have to do. So this minus minus is plus, that means minus 64 plus minus 15, sorry 64 plus 15 is 5 plus 4 9, 6 plus 1 7. और माइनस होता प्लस है, पर साइन किसकी लगती है? नेगेटिव की लगती है ना. माइनस 79 प्लस 14 अपॉन 36. नाउ प्लस माइनस माइनस, और साइन किसकी लगेगी? बड़े नंबर की. तो हेयर इट विल बी माइनस 65 अपॉन 36. आई होप इट इज क्लियर नाउ. नाउ कमिंग टू ऑप्शन नंबर 5. So option number 5 is in question number 3, minus 3 plus 1 upon 8 plus minus 2 upon 5. So whenever you are having any number which is not having any denominator, so as I have told you already that you have to consider 1 as the denominator. Now what is the LCM of 8 and 5? The LCM of 8 and 5 is 8 5s are 40. जब कभी भी आपको ऐसे दो numbers मिले which are co-primes means the two numbers do not have any other common factor apart from 1. 5 और 8 का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही इसका LCM होगा. तो आपको इसमें LCM लेने की ज़रूरत नहीं है. सो 5 8s are 40. सो LCM of these two numbers is 40. To make it 40 we have to multiply by 40. To make this number we have to multiply by 5. Now to make it 40 we have to multiply by 8. Now proceed with the next step. 3 multiplied by 40 is
minus 120 plus 5 minus 16, and here the denominator is 40. So as I told you, firstly we have to add, then we have to subtract. So minus 120 plus 5 plus minus minus, and साइन किसकी लगती है, बड़े नंबर की. So this is minus 115 minus 16 upon 40. Now when you are going to add 115 and 16, what will be the answer? The answer will be minus 131 upon 40. स्टूडेंट्स, जो भी हमारा आंसर आता है, अगर ये सिंप्लीफाई हो पा रहा है, इफ़ वी कैन रिड्यूस इट टू द सिंपलेस्ट फॉर्म, देन वी हैव टू रिड्यूस इट, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी. अगर आप नहीं भी रिड्यूस करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. आपका तभी भी आंसर सही ही माना जाएगा. नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ ऑप्शन, देन ऑल्सो योर आंसर विल बी करेक्ट इफ यू आर नॉट सिंप्लीफाइंग इट. Simplification is must in those questions. For example, a multiple choice question is given to you and it is having 4 options and you have done this simplification. For example, I am doing option number 6. So what is option number 6? Minus 13 upon 8 plus 5 upon 16 plus minus 1 upon 4. So this is option number 6. For example, I am asking you this question and I am giving you 4 options. I am giving 4 options as the answers from which you have to choose. And in those options आपने जो भी solve किया, for example इसका जो भी आंसर आएगा वो आपने solve किया और solve करने के बाद वो simplify हो सकता है. And in the options I have given the option of simplified one. मैंने simplify वाला option दिया है, मतलब reduce करने के बाद. Then what you have to do, you have to simplify it and then you have to choose your answer. पर अगर ऐसा नहीं दिया है तो इट्स नॉट नेसेसरी टू सिंप्लीफाई इट, पर अगर आप कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद सिंप्लीफिकेशन एंड रिड्यूसिंग दिस. सो व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 8, 16 एंड 4? जब आप 8, 16 एंड 4 का एलसीएम लेंगे तो ऑल द नंबर्स कम इन द टेबल ऑफ 4. सो द बिगेस्ट वन इज़ द एलसीएम. देखो 4 1s are 4 2s are 4 4s are. सो ऑल द नंबर्स आर कमिंग इन the table of 4, so the LCM will be 16 only. अगर आप चाहें तो मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ. 4 1s are 4 2s are 4 4s are, then 4 1s are 4, यहाँ पे 2 हो गया, 4 4s are 16, 16 2s are 32. यहाँ पे आपका LCM क्या आ गया? 32 आ गया. जब हम इसका LCM ले रहे हैं, 4 1s are 4 4 2s are 8 4 4s are 16. अब 4 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो आप पहले से 2 से ही कर दीजिए. 2 1s are and then 2 2s are, then again 2 1s are 2, तो 4 2s are 8 8 2s are 16. अब मेरा LCM सही है. पहले मैं I was making a mistake, I was doing it by 4. So what is the LCM? The LCM is 16. So what we have to do? So students, the LCM is 16. So 16 is already 16. Now to make it 16 we have to multiply it by 2, and to make this number 16 we have to multiply by 4. So 26 plus 5 minus 4 upon 16 plus minus minus, sign किसकी लगेगी? Of the greater number. So 26 minus 5 is 21. Now it will be minus 25 upon 16. What will be the answer? The answer will be minus 25 upon 16. Now I am going to explain you the simplification. Simplification is also having how many parts? There are 6 parts in simplification. So I am going to solve first, second and third option, right? So option number 4, 5, 6 will be your homework. So let's begin without wasting your time. So the first option in simplification is minus 8 upon 15 plus 2 upon minus 3. So as you all can see that the denominator is negative. Now to make the denominator positive, we have to multiply this number, both the numerator and denominator, by minus 1, right? So it will be minus 2. So minus 8 upon 15 plus minus 2 upon 3. Now we have to take the LCM. So LCM of 3 and 15 is, I have already told you, 15 also comes in the table of 3. So 15 is the LCM of both the numbers. ठीक है, आप LCM लेके भी देखेंगे 3 और 15 का, तो 15 आएगा. So minus 8 minus 10 upon
15, which will be minus 18 upon 15. Now as we all can see that this can be reduced, so I am reducing it. 3 6 are 18, 3 5s are 15. So minus 6 upon 5 is the right answer. Okay students, now coming to the second option. So the second option is minus 7 upon 10 plus 13 upon minus 15 plus 27 upon 20. So the first thing which we have to do is to make this denominator positive. So we are going to multiply it by minus 1, both the numerators and denominator. So it will be minus 7 upon 10 plus minus 13 upon 15 plus 27 upon 20. Now what is the LCM of 10, 15 and 20? So I am going to take the LCM of 10, 15 and 20. All the numbers come in the table of 5. 5 2s are, 5 3s are, 5 4s are. Then 2 1s are, 2 2s are. So the LCM is 5 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 2. So what is the LCM? 5 2s are 10, 10 3s are 30, 30 2s are 60. So the LCM of these three numbers is 60. Now to make it 60, what we have to do? Multiply it by 6, multiply it by 4 and multiply it by 3. Now minus 7 multiplied by 6 is equals to 7 6 are 42 plus minus 13 4s are 52, 27 3s are 81 and right, the denominator was 60 as the LCM was 60. Now minus 42 minus 52 दोनों को हम ऐड करेंगे बिकॉज माइनस माइनस प्लस और साइन किसकी लगेगी? माइनस की लगेगी. सो इट विल बी माइनस 94 प्लस 81 अपॉन 60. नाउ माइनस 94 प्लस 81 प्लस माइनस माइनस और साइन किसकी लगेगी? आपकी बड़े नंबर की, ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर. सो इट विल बी माइनस 13 अपॉन 60. आई होप इट इज क्लियर नाउ. नाउ कमिंग टू द थर्ड ऑप्शन. So please pay attention. So students, the third option is minus 1 plus 7 upon minus 9 plus 11 upon 12. So this denominator is negative. To make it positive, multiply both the numerators and denominators by minus 1. Now can we take the LCM of 9 and 12? Yes, we can take the LCM of 9 and 12. The LCM of 9 and 12 will be 36. मैं एक बार आपको लेके दिखा देती हूँ. 3 3s are 9, 3 4s are 12. Now 3 3s are 9, 9 4s are 36. Now to make it 36, multiply by 4. To make this number 36, multiply by 3. And to make this 36, multiply by 36. So the next step will be minus 36 minus 28 plus 33 upon 36. So minus minus, reply your answers in the comment section. Plus, so minus 36 plus 28 minus 36 plus 28 क्योंकि दोनों नेगेटिव है पर हमें क्या करना है? ऐड करना है. So 36 plus 28 is minus 64 plus 33 upon 36. Now plus minus minus. Now when we will reduce this 64 minus 33, the answer will be minus 31 upon 36. I hope everybody has understood. Simplification also. So coming to question number 5. All the options which I have left or skipped in this question are your homework. Now the fifth option is express each of the following. Fifth question is express each of the following rational numbers as the sum of an integer and a rational number. So the first one is 12 upon 5. So I just wanted to explain you how do we express this. I think I have already explained also. I have already explained this. मैंने बताया है. तो जब 12 upon 5 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आप 5 को जब 12 से डिवाइड करते हैं, 5 2s are 10, रिमाइंडर इज 2. तो जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर होता है, जो क्वोशिएंट होता है वो आपका यहाँ पे होता है एज ए होल, and the divisor is written like this. 5 2s are 10 and 10 plus 2 is 12 upon 5. So we can write like this, 2 wholes and 2 upon 5. But we have to write it in the form of an integer and a rational number. So it will be written like this, 2 plus 2 upon 5.
वाई इट कैन बी रिटन लाइक दिस 2 + 2/5, क्योंकि जब आप इसका एलसीएम लेते हैं तो देखिए जब नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता, सो वी यूज टू कंसिडर डिनोमिनेटर एज 1। तो जब आप 1 डिनोमिनेटर कंसिडर करेंगे तो 1 और 5 का एलसीएम तो 5 हुआ ना, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10 + 2/5 दैट इज 12/5। सी वी आर गेटिंग द सेम थिंग, so that is why we can express like this 2 + 2/5। I hope you must have understood. Coming to the second option, -11/7। How do we write -11/7? माइनस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप विद इन ब्रैकेट इसको एज ए होल लिखेंगे। तो व्हेन यू आर डिवाइडिंग 11/7, सो 7 × 1 = 7, राइट। 7 में क्या ऐड करेंगे कि वो 11 बन जाए 4। सो वी कैन राइट लाइक दैट -1, इट विल बी माइनस विद इन ब्रैकेट 1 4/7। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिखेंगे -1 + 4/7। अब ये माइनस जो है इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस, सो इट विल बी लाइक दैट -1 + -4/7। अंडरस्टूड। जैसे कि आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे इसमें सिंप्लीफिकेशन में। नाउ कमिंग टू द थर्ड ऑप्शन। So the third option is -25/9. How do we express -25/9 as a sum of integer and a rational number? कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आप लिखेंगे जब आप डिवाइड करते हैं इसको, -9 2 = 18 होता है, 18 में हम क्या ऐड करेंगे कि वो 25 बन जाए, तो 7 ऐड करेंगे, तो माइनस विद इन ब्रैकेट 2 7/9, 2 होल्स एंड 7/9। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2 + 7/9 एंड दिस माइनस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय बोथ, सो इट विल बी -2 + -7/9। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड। कमिंग टू द फोर्थ ऑप्शन। -103/20। तो 20 के टेबल में 103 है, उससे कम क्या आता है, जब आप डिवाइड करके देखेंगे सो इट विल बी 25 से 100 होता है आपका, माइनस बाहर रहेगा आपका, 25 से 100, 100 + 3 = 103, सो इट विल बी माइनस विद इन ब्रैकेट 5 + 3/20 एंड वी कैन राइट लाइक दैट ऑल्सो -5 + -3/20। So I hope everybody has understood now. So students, that's all for today, and if you have understood, please like the video, subscribe the channel. Subtraction of rational numbers will be explained you in the next video. Thank you. Subscribe the channel and press the bell icon.